Then, ma'am. yeah, then how come I see here, please note, I think so BB sir has given, you will be admitted in class after 50, class starts at 11:45. How can it be today? How can ম্যাম it be এটা না, I ম্যাম think এটা confusion আমরাও হয়েছে কিছু একটা। বুঝতে হ্যাঁ, পারছি না যে কি হচ্ছে, না আমরা না নিজেরাও কনফিউজড। তো এটা তো আজকে তো থার্সডে না, আমি সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করছি, ইফ আই এম নট রং। হ্যাঁ আজকে তো হ্যাঁ, তো থার্সডে, আই তো হ্যাভ গট, আজকে তো আপনারই ক্লাস থাকে আমারই আমাদের। ক্লাস আছে, লেট মি কল হ্যাঁ, হিম এন্ড সি। ইয়া ম্যাম আপনি একটু দেখুন। এক সেকেন্ড, সায়ন মল্লিক। ওনার কি এর পরে ক্লাস আছে নাকি? ওনার ক্লাসটা আজকে কবে আছে? আজকে ওনার ক্লাস না ম্যাম অ্যাকচুয়ালি নেই আজকে আই নেই। থিংক। তাহলে কি গত উনি দিন ভুল করছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো কনফিউশন হচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম। আমার না আমরা নিয়ে সেটা তো নেক্সট উইক থেকে চেঞ্জ হবে। শুভম দে, স্যার লিঙ্ক ম্যাম পাঠিয়ে বিবি দিয়েছে। স্যারও লিঙ্ক পাঠিয়েছে। দুটো ক্লাস হবে একসাথে। কনফিউশন। না স্যার, আজকে তো আমার ক্লাস আছে, আপনি দিয়েছেন আপনার 11:45 থেকে। আজকে নতুন হয়েছে, আমি তো দেখলাম না নতুন সিলেবাসটা, ছেলে মেয়েদের কাছে কোনো এ নেই বলছে। এ বাবা, আমি তো ক্লাসে বসেও গেছি। এ বাবা, ওখানেও ঢুকে গেছে। হে বাবা। বাবা, ম্যাম লিংক দিয়ে দিয়েছে তো স্যার। ম্যাম তাহলে কি এই ক্লাসটা লিভ করব? নিউজ ওটা কোথায় দিয়েছে নতুন রুটিন। রুটিনটা? স্যার আমরা জানি না ম্যাম, আমাদেরকে সেন্ড করেনি। ম্যাম আমাদের কোনো রুটিন দেয়নি বাবা, তো। আমরা তো কিছু মানে পাইনি আমার, এখন। আমি তো দেখি চোখেই পড়েনি আমার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও আ- আম- আমি তো ঢুকিয়ে দিয়েছি, প্রায় 15 জন মতন এসে গেছে আমার। হ্যাঁ, আমারটা কবে দিয়েছে দেখুন তো, তাহলে আপনি নেক্সট ক্লাসটা আমারটা নিয়ে নেবেন, নাহলে কি করবেন আর। দাঁড়ান আমিও চেক করছি, কিন্তু আমি একটু নিয়ে নিচ্ছি, কারণ আমার না নেক্সট উইকের পর থেকে না আমার একটু প্রবলেম আছে, আমি আপনাকে জানাবো আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি কন্টিনিউ করছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমাদের যে নতুন টাইম টেবিল দিয়েছে তোমরা সেটা জানো না? নো ম্যাম আমরা ম্যাম জানি না, আমরা আমাদেরকে তো কেউ পাঠায়নি ম্যাম। জানি না। কি মুশকিল। হ্যাঁ, শানু প্রধান। রবিনা,
ম্যাম আপনি কি ক্লাস নেন তাহলে? হ্যাঁ আমি নিচ্ছি। ওকে ম্যাম। এই তুমি টাইম টেবিল পাল্টেছো, আমি তো কোথাও দেখলাম না টাইম টেবিল। এখানে তো আমার ক্লাস ছিল, এদিকে বিবি স্যারও ক্লাস দিয়ে রেখে দিয়েছে। এমা বিবি আমাকে ছেলেরাও তাই বলছে তো, কিন্তু বিবি স্যার বলছেন যে তুমি নাকি কালকে ফোন করেছিলে, তুমি নাকি বলে। ও আমাকে, হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা। ও বুঝো। আর উনি, হ্যাঁ উনি দিয়েছেন ছেলেরা অর্ধেক, মানে আমার এখানে 15-20 জন জয়েন করেছে, আমি ভুলে দেখছি এত ঠিক আছে, আপনি তাহলে একবার বলে দেবেন নাকি আমি বলে দেবো? ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ম্যাম, বলো। ম্যাম মেটেরিয়ালসটা পেয়েছি আমরা, মানে আমি পেয়েছি। কি পেয়েছো? ওই যে মেটেরিয়ালসটা যেটা আপনি দিয়েছিলেন। ঠিক আছে, তার মানে পেয়েছো মানে এভরিওয়ান ক্যান ভিউ ইট, ইজ ইন দা গুগল হ্যাঁ ক্লাসরুম। হ্যাঁ ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই বললাম whether you can view or not, সেই জন্য আমি ভাবলাম যে তোমাদের একবার চেক করে নাও আর কি। হ্যাঁ বুঝতে পারছো? করে নিয়েছি, চেক পেয়ে গেছি। ঠিক আছে, তাহলে then everyone will be able to view it. No হ্যাঁ হ্যাঁ, problem. ঠিক আছে। Lakshmi Hattad. Good morning, ma'am. হ্যাঁ গুড মর্নিং।
গুড মর্নিং ম্যাম। গুড মর্নিং। সবাই গুগল ক্লাসরুমটা কোডটা লিখে নাও। ম্যাম কোড কত নম্বর? ওই তো দেওয়া আছে তো, আবার কত নম্বর মানে? পাওয়ার পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছ না? পাওয়ার পয়েন্টের নিচে দেওয়া আছে যে। ও ইস ম্যাম, ওকে। তোমাদের মেটেরিয়াল বলো, ক্লাসের মানে কোনো কোয়েশ্চেন দেওয়া, কিছু দেওয়া, সব ওখানে পেয়ে যাবে। অ্যাসাইনমেন্ট। হ্যাঁ ম্যাম, পেয়েছি। হ্যাঁ ম্যাম এখনই কি জয়েন করে নেবো? হ্যাঁ, বলছি ম্যাম এখনই কি জয়েন করে নেবো কোথায় জয়েন করবে? ক্লাসরুম? জয়েন তো করে বসে আছে, আবার কোথায় জয়েন করবে আমি তো এটাই বুঝে পাচ্ছি না। তুমি তো কথা বলছো আমার সঙ্গে। ম্যাম ক্লাসরুম। ক্লাসরুম জয়েন করে কি করবে? ওখানে তুমি মেটেরিয়াল গুলো পাবে, আর কিছু পাবে না। ওখানে কথাবার্তা কিছুই না পাবে না, ওখানে তুমি মেটেরিয়াল গুলো পাবে শুধু। ওকে ম্যাম, ওটাই বলছিলাম ম্যাম, জয়েন করে রেখে দিচ্ছি। জয়েন করার কিছু নেই, দেখে নাও তুমি দেখতে পাচ্ছ কিনা। সবাই পাচ্ছে দেখতে, সো ইট ইজ দেয়ার, সো ইট শুড নট বি আ প্রবলেম। সেটাই বলছি। ওখানে তোমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টারে তোমার পাওয়ার পয়েন্টটা দেওয়া আছে, যেটা ক্লাস নিয়েছে পাওয়ার পয়েন্ট ইজ দেয়ার। হ্যাঁ হ্যালো। হ্যাঁ। হুম। না না ঠিক আছে, আমার না আমার যেদিন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আফটার 4:30। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো রাখুন না, তারপরে আমাকে দিন। ওদের যেদিন পরের দিকে ক্লাস থাকবে, এটা আপনি নালে দেরি করে চালু করতে পারেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরের থেকে, রাইট। আর ফার্স্ট সেমিস্টার এটা। না না তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, সেটাই ভালো হবে, সেটাই আমি বলছি আর কি। ঠিক আছে। হুম, খুব স্বাভাবিক সেটা। আমি কথা বলেছিলাম আমাকে। হুম 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 হুম, বাবা। হুম, 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 হুম। হ্যাঁ ঠিক আছে। না না ঠিক আছে, আমাকেও তাই বলেছে। নন্দনে তাই বলেছে যে ম্যাডাম আপনি 5টা হলেও হতে আপনার যখন সুবিধে আপনি পরের দিকে নিয়ে নেবেন। আমি সেটা। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি আপনার আমার মতন করে আমি স্টুডেন্টের সঙ্গে কথা বলে আমি ওটা করে নেবো, নো প্রবলেম। জাস্ট ইন। হ্যাঁ হ্যাঁ থাক, রুটিনটা থাক, রুটিন নিয়ে কোনো এ নেই। ঠিক আছে। রাইট রাইট।
ঠিক আছে। হ্যাঁ। এনজিও তো মাথা খারাপ হয়েছে। হ্যাঁ, রাইট। ঠিক আছে। হ্যাঁ, come on, so let's start. So you can see the Google Classroom. Classroom code is there. You take the code for all your assignments, PowerPoint, everything. আবার কে জয়েন করলো? এতক্ষণ বসে থাকলাম জয়েন করবে বলে। বলে না মুশকিল হয়ে যায়। কে এসছে? সৌরভ দে। সৌরভ দে। ওকে। তো সবাই করে নাও, আর না করলেও বন্ধু বান্ধবদের জিজ্ঞেস করে নিও, because those who have joined or not copied down, you will get it from your friends. So today we will be doing starting the second chapter, that is the relevance of value based management in global change. Now, so what is it basically? So value is, in a narrow sense, what we say. It is that what is good, it is desirable or worthwhile. So values are basic and it is the fundamental belief. We believe in that. That is the value basically. That guide or motivate our actions, our attitude. For example, we believe that honesty is the best policy. This is our belief. That is what it says. So if you see what are the different type of values, one is the character value. Character value means what is it? Your loyalty, your devotion, your kindness, generosity, so on. Work value is that it is you keep your promise, you are honest, you are committed to your work. That are the work values. And what are the personal values? Personal values is your perfection, simplicity, sincerity, lovingness, and so on. So these are the basically three types of values. And core value means if you divide, you get these type of three values. But if you see the five core values are integrity, that means you know what is right and wrong. Respect, that means you will treat others as you will want them to treat you. Responsibility, you know that what is the meaning of responsibility. Then sportsmanship, and then is the you should be a good leader means you should serve the common people. Now these values, we will now go through the impact of values on the stakeholders. These values, how they help the stakeholders. Now, who are the stakeholders? The stakeholders are people or group of people or organization who are impacted by the outcome of the project you are going through. Just give me a minute, someone is there. Shurubhi Singh. Surabhi Singh. Okay. So they are, that is it. So these stakeholders, acha, you will say that how they are affected because they can be the sponsoring. They are giving money for the project you are handling. So they can be they can have a positive attitude or a negative attitude towards the project you are dealing. They are giving you basically the practical, business practical, and the financial support. So we can say that this stakeholders are basically people who are interested in the company. So it can be from your employees, it can be the customers, it can be the investors. Even the customers are because they are buying from you. So now stakeholders can be divided into three groups. Stakeholders are basically very important because they help to focus the organization on its mission, objective, and the purpose. And they make a
they can make a major contribution to the general strategic decision of the organization because they have got some interest, so they can guide or contribute in making the general strategy that where the organization should be heading to. So we see that they are the internal stakeholders. Just now I said they can be from inside. They can be the employees or they can be the manager. Next is the connected stakeholder. So that means they have direct relationship to the company and they can be the investors, suppliers, customers, lenders, and so on. And the external stakeholder exist independently of the organization, but they have the influence over it, and this includes the national and the local government and the general public. Got it? These are the external stakeholders. Because the government will be interested in this thing because they are making the rules, regulations, and whatever is the turn off it is, depending on the turn off and the what you say size or your this thing. So you will be generating employment, which is what you say. It helps in the economic growth of the country. So they are the external stakeholders, and you are paying the tax also. Okay. So in general, if you say you can say the stakeholders are the customers, they are the employees. We said they are the investors, suppliers and vendors, the community because also the community you have to see because the health, safety, how it is affecting the environment where people are, the society are there. Suppose it is giving out some poisonous gas, and which the people around that organization they are inhaling, or they are giving out some the wastage they are throwing it into the water bodies where the people are consuming that water in form of say fish or something else. So these are the things. And government, as I said, it is the tax and the GDP and so on. So that is what it is. Now, stakeholder value is important because it relates to the general management of the organization. Okay, stakeholder value is related both to the financial perspective of the organization because we expect return on the investment, and also to the intangible asset represented by human capital management. Just now I said by giving employment and all these things. So that is the intangible asset in form of human capital management. Because if your organization of your this thing is moving forward, it is a successful project. Naturally, you will be requiring more people. That means you will be providing employment. So that is what it is. And another is the financial perspective because the more your profit is, the more you will be paying your tax to the government, all these things. So from there it comes. Now, the intangible asset is also a key concern of knowledge management. Intangible, just now I said the human capital, that is knowledge management. From these people you have employed, the people who are there, it is not only the ground level employees, it is the top level also where you are using their skills, their knowledge for generating the profit or taking your project ahead. So one way to measure stakeholder value is through the computation of the social efficiency of the firm. Okay. So if you consider the management philosophy is maximization of the interest of all stakeholders. That is the philosophy of the management. That you have to see the interest of all the stakeholder as its highest objective. Because then only you will be able to succeed. Its objective is to maximize this value by the following policies. Now, what are the following policies? That is minimize the cost and waste. Why? My goodness, someone else is there. Just wait. Who else? Oh, Anuj Kumar Singh. Anuj Kumar Singh. Okay.
So improving the quality of the product, enhance the cost control while rising the quality of the product that the organization is making. The next is the enhance the skill and satisfaction of its employee. So you have to take care that the people, those who are involved, from time to time they get the training or some workshops are held so that whatever the skills they are having, they are sharpened, they are updated, and so on. And satisfaction of the employees. You have to see the satisfaction also that the your employees are satisfied. Okay, so and also you improve the moral of the satisfaction. Moral of the company's employee. Another someone is there. They're so disturbing. Justin. এই যে যে এখনই জয়েন করলো দোকানে নাম জাস্টিন দেওয়া আছে ক্যান ইউ হিয়ার মি ক্যান ইউ হিয়ার মি কি হলো Yes, ma'am. হ্যাঁ তো ইয়েস ম্যাম এখন এত দেরিতে কেন যখন আমি 10:30 তে লিংক পাঠালাম 10:30 তে তুমি কেন জয়েন করলে তোমার ফার্স্ট ক্লাস ছিল না মধুমিতা ম্যামের I was trying from since 10:45. I mean like 11:45. I think See, you were not don't say accepting, you ma'am. are trying from 11:45 তুমি 10:30 তে তুমি লিংক পাঠিয়ে আমাকে দিয়েছিলে No, ma'am. I I was wasn't sitting got with the this link, but I laptop. was তোমার trying. 10:30 তে তোমার অন্য ক্লাস ছিল। আর এখন Ma'am, I তুমি tried বলছো যে before the time. এখন বলছো যে তুমি 10:45 না কত 11:45 থেকে তুমি ট্রাই করছো তাহলে অন্যরা কি করে ঢুকেছে? At least you have come for the management, you should be able to manage yourself. বই পড়া আর এ করা ডিগ্রি নিয়ে I don't know where you are going to finally end up. তাই গেলাম। Oh, enhance the next the third point. Contribute to the development of the community from which it draws its resources naturally because you're taking the raw material, you're taking the human being, manpower, all these things we are taking it from the society only. So we have to, this is how we can contribute to the society. Just now I said by giving employment. Okay. So these are the things. So therefore, more than only or simply you can say the financial value, we can also financial value means in terms of the return on the investment, and also you can say the your product has been enhanced. That means whatever the customers are looking for, then better governance, improvement in terms of the condition of the organization, that is for the employees and all these things. Then improved payment system, that means everyone is paid on time and whatever is desired by them. Payment means it includes the supplier perspectives because see the inside people, they will be like I said the stakeholder in the previous chapter. See, internal stakeholder, the internal stakeholder means they are the people inside. Every month they will get the salary, but basically the problem is with the suppliers. That means their supplies or their payment is most of the time they are withheld. बाद में देंगे, it is something of that. So that should also be really of concern. So in reality, many of these concerns interact and ultimately they may combine through their overall impact on the financial performance of the organization. Because if you are not improving your product, improving means from the customer side, the customer wants something. So you have to provide them, otherwise they will go off to they will take another brand, they will move on to another, say, similar product but from another company. You will be losing your customer. Even supplier, if you are not able to satisfy them by giving them payment proper time, all these things, then they will also stop giving you. So this will be affecting you in the financial performance. That is what it says. So some of the most significant sources of value for an organization are basically non-quantifiable. You cannot just say it and quantify, you cannot quantify them. And you cannot easily identify or distinguish it.
So one way to cast a wide through net of capturing these elements of value is take a stakeholder approach, because being in the organization or being in this project leader will, you cannot say quantify the okay, means it's not a structured thing. Quantify means you quantify 2, 4, these are the figures you quantify. It is not that. So you have to take the stakeholders approach when you try to view all these things. If you take the stakeholder view, then your what this resources are better utilized, and it will be for the longer time. So stakeholders thinking is required, and that is you should think deep and in a broader way. So if you say that, what are the approaches? If you say you are, it is not quantified. Means you cannot say you do this, you will get this. So it is sustainable, competitive thinking that tends to be visionary. That means which is going to be there for a long time, and competitive means you are able to compete with your competitors. It should be that. You should have that type of thinking. Then multi-view of the organization, regardless if it is quantifiable. That means not in only one direction. If you are able to quantify it, you should not look at it and be happy. Okay, ठीक है, हो गया, इतना मिला था, इतना मैंने you have invested so much money and you have got this. Fine, I'm very happy with it. So it should not be in one direction. You should see it in different direction also. You are getting it and you are happy, so it should not be there. From every angle, you should look at it. Performance evaluation means that is the strategic issues, not the operation only. Means what you are producing in the operation level, it should not be there. You should take the proper strategies also, because the strategies only finally help you. Say there is some change in the market. Okay, so you have to take the strategic well. Like this strategic decision during COVID, you know what the situation is like. So all the, what you say, the owner of this organization or whatever it is, the CEO and the head of the this, so they have to very carefully and going deep thinking all these things. They have to change their strategy, that how they can survive, because people are not able to come physically, performance are affected. So strategy they have to make. That is, you can say in a broader sense, rules, regulations, how you are going to carry on your project. Next is the strong value system across the entire value chain, and that extends to external stakeholder. Means value system should be there. Then easy flow of new ideas and innovation. Easy flow means everyone should be a part of it. If anyone has got a new ideas or innovative ideas, so it should be listened. You should listen to them. That is what it is. Then management does not embrace quick fix solution. Management does not embrace quick fix solution, instead opting to move cautiously and incrementally to avoid paying a heavy price. Means immediately if there is a problem, immediately you just don't do it. Anything, whatever it is, immediately you don't do. You give it a thought. ये ऐसा problem हुआ है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या solution हो सकता है. First you see the consequences, then you find out the solutions, and then you, that is, it says that you move cautiously and then increment, means you implement it, so that you are not a, you do not lose heavily. The next is the people who create value are most likely to advance within the organization. That means those who have values within them, those who follow these values, who believe in these values, they will rise in the organization. The bottom line focuses on value. What value are we adding? That means the bottom line means finally that is that we should focus on the value. That is what values are there in the organization. The growth through the intangible, that is relationship, competitiveness, knowledge worker, thinking in terms of opportunities for growing the business around the core competency. So you have to give a thought that how you can grow your project, your organization will grow. Grow means in terms of profit.
how much successful you will be. So you have to give thought in all these, in terms of all these things. Business success is what we create for all stakeholder and not only shareholder. Shareholder and stakeholder, I hope you understand. Shareholder, those who have got invested the money only. But stakeholder, that means those who are connected with the organization, like customers also. Customers are not the shareholders, but customers are the stakeholders, because if your customers are not satisfied, then what will happen? You know that very well. They will talk bad about your organization, you will get a bad name, they will stop buying from your organization, you will lose your customer, and so on. So it's not just the shareholder. That is what it says. So HR has responsibility for responding to the stakeholders' interest of employees in particular. Employees you should consider. It's not that the employees को अपन अनदेखा कर दो. HR department को क्या है? They should take responsibility and they should see the interest of the stakeholders का inside में जो employers है in particular, and also working with the business to ensure that the stakeholders' interest and balance and stakeholders' values are also created at the same time. उसको भी ध्यान में रख के you have to, the HR department को, they have to do this work. And so one way of measuring the stakeholders' value is to adopt the balance scorecard approach. Now, what is the balance scorecard approach? Actually, if you see, the balance scorecard approach in management means it is a looking at your organization, means you focus on a very big picture of the strategic goal. So balance scorecard is a strategic management performance, and it is used to identify and improve the various internal business function, and that will give you the finally your external outcome. So these balance scorecard actually are used to measure and provide the feedback to your company. So the scorecard will help you to see how your company is performing, and as a result you will be able to change your strategies accordingly. Now coming to the transcultural human value. Now, what do you mean by this transcultural? It is involving or encompassing or combining elements of more than one culture. That means different type of people are involved in this. Okay. So transcultural is a cultural hybrid. You can say it is a hybrid basically, because more than one culture is involved in it, which interconnects and integrates various cultural forms. That means more than one culture is involved. People from that you see, like in college also, so many type of people are there in your class, all type from all different cultures. That is what it is. The trans culture is a culture which helps to grow basically. It is something that occurs between people of different culture. Just now I said in classroom also, people of different culture. Either someone is Bengali, someone is Maharashtrian, or you can say someone is Hindu, someone is Christian, someone is Sikh. So different. Even in Hindus also, Bengalis, Punjabis, then your Maharashtrian, South Indian. So different cultures are there. So when you work together, it gives you a better, what you say, platform to work on, because they basically include different religious group or people of different nation also. The intercultural basically seeks to reduce the tension between cultures, and it also encourages to understand and recognize each other. People are able to recognize also, okay, what it is. So transculture describes the communities in which they can deeply understand and develop respect for all the cultures. You should develop that. Goodness, transculture. Yeah. So multicultural young people means those people who have got multicultural, means you are from Bengal and you have mane, grown up in some other
other state also, if you say. So what happens? Your culture and says you're a Bengali now. Many of the non-Bengalis who are here, so they are from different states. They have got their culture there. So here, what happens? They have come to Bengal, so they see what the Bengali culture is. क्या बंगाली culture है? उन लोगों में से थोड़ा थोड़ा उनके वो रहते रहते उनमें भी वो सब आ जाता है. उन लोग सीख लेते हैं, follow करते हैं. I'm not saying कि उन लोग अपना culture छोड़ देते हैं. It's a blending of the two cultures. Oh, it can be from two different countries or from two different regions also. So multiple culture refers to a society that has several culture or ethnic group also you can say. So people live alongside one another. सब अपने प्रेम भाव से सद्भाव से we are staying. We are all living. when झगड़ नहीं रहे हैं अपन. What happened? My goodness, why this is happening? हाँ. So we are not fighting with it. We are प्रेम से रह रहे हैं. That is ये अपने को सिखाता है सबसे मिलके कैसे मिलजुल के रहना चाहिए. So that is what it is. So now coming back to the organization, when you are employing people of this from this diverse culture, ah, you are managing the workforce and managing the different work culture. So it gives you lots of opportunity. But there are also risks also when it is not managed properly, which they are not satisfied because you have to respect all the cultures. That is from where the problem may start. So, but you have to respect all the culture. It is not that my culture is good. You cannot do that. In there is a saying in English you have seen, when in Rome, do as the Roman do. Means when you are in Rome, you have to do what the Romans are doing. If you go to Rome, you cannot go. Means when you are in a different country, you cannot follow stick to your own culture. You have to adapt some of their culture also. Otherwise, it will be very difficult for you to survive. That is what it says. Now, the transculture management is a new approach. It is a new approach in the organization, basically. It suggests that emphasis should rather be on commonality between the culture. That means what are the common things which the culture, all the different culture says, than on the differences. You should not go on the differences because I said, what is culture basically? Culture is basically it is a belief of a person. What you believe, you cannot change a person's belief. So if you try to do that, जो कोई विश्वास करता है उसको तो नहीं चेंज करने को जाओ तो तभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तभी झगड़ा लगता है, मारपीट हो जाता है. So what we have to see, we should see the common side. Common side. That is what it says. So if you do that, then only this barrier will be reduced. जो कौन कहाँ से है, क्या है, नहीं है, it will reduce. Now the transcultural human values that will make a good manager. And now the values which are same across the different culture in the world, they are called the transcultural human values. These values make an individual a good manager. So some of the transcultural values, they are that the managers follows are unbiased personality. कोई partiality नहीं करना है, सबको एक माने एक साथ देखने का है. ये नहीं कि ये मेरे कास्ट का है उसको ज्यादा माने उसको ज्यादा केयर करो, उसको ज्यादा फैसिलिटीज दो. It should be unbiased. It should be unbiased. Then is the loyalty towards worker. I left it. Loyalty towards worker means you should be loyal. You have to be loyal. You cannot be unloyal to your worker. Then it is the self-discipline. Self-discipline means you yourself should be first disciplined. Because if you are not disciplined, for example, if you are not going to the your office or your workplace on time, then how can you, being a manager, how can you tell your team member, those who are working with you, that be on time, be punctual? That is it. So it cannot be there. Then clear objective. The manager should have a very clear vision of what project he is handling and what he wants from his team member. Because if he is not clear about
about the objective, he will not be able to communicate properly. And as a result, the people, the team members involved will not be able to give you that output. उनको तो मालूम होना चाहिए तुमको क्या चाहिए. तुम बाजार गए हो, किसी ने बोला जी अच्छा सपोज तुमको बोला जी एक शर्ट लेके आ जाओ. अरे व्हाट डू मीन बाय शर्ट लेके आ जाओ. शर्ट कॉटन शर्ट हो सकता है, टेरिकॉट का शर्ट हो सकता है, गरम शर्ट हो सकता है, हाफ शर्ट हो सकता है, फुल शर्ट हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. So it should be clear. You are going to the market, get me a full cotton shirt of light color or deep color. Clear objective तुम जाओगे, you will get that. So the clear objective should be there. Then open minded means you should be open minded. Rigid नहीं होना है. जो मेरे को जो मालूम है वही है. You should be able to accept whatever the discussion, whatever the changes that are going on, you are able to accept it. Accept करने से ही then you will be able to think clearly. Okay, this is what is going around. So now next, how I have to handle my manager. Rigid नहीं होने का है, ऐसे ही करने का है. ऐसा ही होता है. It should not be there. Then transparency in dealing. That means when you are handling these people, suppose किसी को तुमने ज़्यादा पे मैंने इंसेंटिव दिया, so people should know clearly कि क्यों उसको इंसेंटिव मिला है पूरा एकदम. So otherwise ट्रांसपेरेंसी नहीं रहने से you know what will happen. अंदर अंदर लोगों को चिड़ेंगे. They will be angry कि देखो उसको पार्शियलिटी कर दिया. But it's not partiality. He really deserved it. या फिर किसी को पनिशमेंट दिया, तुमको क्लियरली तुमको बताना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ दिस ही हैज बीन पनिश्ड. क्योंकि हो सकता है पनिशमेंट दिया बिकॉज यू कैन नॉट, यू डोंट लाइक द पर्सन, इसलिए थोड़ा सा कुछ हुआ तुमने पनिशमेंट कर दिया. सो दैट शुड नॉट बी देयर. पूरा क्लियरली होना चाहिए. और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. चारों तक तुम्हारा जो है उसका भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. सोसाइटी के तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. So we say that the manager should not think of his own interest. All the opportunities, all the responsibilities, all these things would be the same for all the employees of the same level. फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, जो फर्स्ट ग्रेड लेवल में है उनको सबको एक टाइप का मिलना चाहिए. तो सेकेंड लेवल में जो है उनको भी एक टाइप का मिलना चाहिए. So these are the things. So these values basically it helps in decision making. If you are working for the interest of the organization, if you are very clear, if you are doing your responsibilities, then naturally it will help you to make the decision properly because you are having a great respect for the ethics of the organization or even for the um, taking the economical or the social, because ethically you have to do it. You have to do it ethically. So, like I said, all these things are there. Now, coming to the next one. Now, you say that what makes a good transcultural leader? So, like we saw, moving, discovering new places, countries, learning new languages, being empathic, then also having curiosity towards other and other transcultural leadership aspects. All these things will help you to become a good leader because you should have that learning capacity. लर्न करो, जितना करो, जो भी जहाँ पे भी हो वहाँ का लैंग्वेज सीखो, वहाँ का कल्चर को अच्छे से समझना समझो. Because the more you understand their culture, the more you will be able to interact with those people. You will be able to see their point of view, what they are, how they see things. सबका अलग अलग होता है ना देखने का नजरिया. What we say in Hindi. So that is what it is. So if you conclude, you can say that our people overall, how they are inspired with a sense
self-discipline, self-respect, sense of humor. So these managers and the employees should be, what you say, get along well. It should means they should be looked upon as a common citizen. You can say. अलग अलग देखना ये देखना ये नहीं. तो ट्रांसकल्चरल वैल्यू अपने को हेल्प करता है. हर चीज देखो ना, लाइक फूड ऑल्सो. Our food it has become so much transcultural. What not we are consuming. Otherwise, typical Indian foods क्या है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी. So these are the things. But people are going for chow mein, noodles, then pizza, burger. These are not our food. So that is it. But is it bad? No. That is what is. So values also you should see the good things. You should develop those things. So then you will be able to be a good manager because you will be able to handle your team member because they are coming from different backgrounds. So that is it. Now coming to the spiritual versus secular values. Now what do you mean by spirituality? Spirituality actually involves it's a belief in relationship with some power of divine. That means infinite source of energy. That is the infinite source of energy. Spiritual बोलते ना वो काफी इंसान वो spiritual है. And it is derived from the word spiritus. जिसका मतलब है wind or the breath. Spiritualism. Spiritual means basically that religious, it is something religious or the people who believe in religion. That is spiritualism. Human values are based on spiritualism. Belief के ऊपर विश्वास करते हैं. So they act as base for this spiritualism. Basically अपने को सोचने का जो अपन सोचते हैं ना, the base होता है उसका अपना spiritualism. And spiritualism means basically religion or the religion belief it is. So we think in that action. Skills, behavior, everything is, it comes from our belief in our religion. And if you say the spiritual practice, so what is it? It may include meditation, mindfulness, prayer, or then your the sacred books that we have seen previously, or the Arthashastra, Bible, Quran, and so on. The sacred text, then ethical development, love, etc., are all, you can say, are the mainstay of the spiritual development. My goodness, some अभी कौन आ रहा है? Give me a time. Agori का shortcut. My goodness. Agori का सरकार. Okay. So that is it. And if you say the spiritual need, now what is the spiritual need? It is the love, it is the hope, it is the trust, forgiveness, you're being respected or valued. उनको लोग ऊंचे स्थान में देखते हैं, प्यार करते हैं, उनको विश्वास करते हैं. These are the spiritual needs जो अपने को चाहिए रहता है. So if you come to the main features of this, it is the divine qualities, like the respect for elders, believe in given, giving than taking. Divine qualities मैंने जिसे है ना, जे दूसरे को respect करो, फिर दूसरों को देने में विश्वास करो, लेने में नहीं. That should be there. The next is the work is worship. That means you should be dedicated towards your work, you should be loyal, you should be responsible for the outcome of the work, you should be motivated, you should be confident, and so on. That is work is worship. So you should look at your work as
you are worshipping it. Then is the self-discipline. That is, it helps in proper usage of a time. If you are disciplined, you will be able to use the time properly, and the time, the energy, and the resources also. The next is the belief in religion. That is, spiritual people believe in religion. Those people who you said he is very spiritual means एक बात में है जो वो बहुत religious है. उसका मतलब ही एक वर्ड में आ जाता है वो बहुत religious है. Now वो religious means if you say तो फिर characteristics क्या बोल सकते हो इसमें? इसका spiritual जो होता है उसका क्या क्या हो सकता है? Inner peace रहता है. You believe in something more beyond more than something materialist. Material से ज्यादा तुम इस चीज में विश्वास करते हो. Okay, then you understand the significance of your action. जो मैं ये कर रहा हूँ उसका क्या फल होगा. Now while you are going, किसी के ऊपर गुस्सा आया गाली दे दिया तो bad words use कर दिया. So you should be able to understand कि इसका फल क्या होगा. Back reply कर दिया मम्मी को, टीचर को, किसी को एल्डर को, किसी को कर दिया. So you should understand the significance of your action. Where you should be aware and accept. वो अवेयरनेस होना चाहिए. और जो ये जो तुम्हारा कॉन्सिक्वेंसेस है, सपोज पढ़ नहीं रहे हो, यू विल गेट अ बैड मार्क्स, बट यू विल नॉट ब्लेम योरसेल्फ. क्या बोलोगे? पेपर ठीक से नहीं देखा. उधर बोलोगे पेपर कठिन आया था, एंड सो ऑन. नौकरी ठीक से नहीं मिला तो यू विल नेवर लुक इनटू योरसेल्फ. जो मैंने सिंसियरली नहीं पढ़ा, मेरा कॉन्सेप्ट, माय कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर, सो हाउ डू आई गेट अ गुड जॉब. See, good job तो किसी को पकड़ के you will get the good job. But then you have to hold on to the job. तुमको उसको तो पकड़ के रखना है ना, जॉब को तो कंटिन्यू करना है. कंटिन्यू करने के लिए you have to work on it. That is what it says. फिर एक और बोल सकते हो तुम्हारा स्पिरिचुअल बीइंग होना मीन्स यू अपनी ईगो से बाहर निकलना. तो क्यों बोला इन द लास्ट क्लास वी वर सेइंग ईगो होने से गड़बड़ हो जाता है. So you should suppress your ego. Now come to the role of management in spirituality. Management means spirituality, how it helps. So having an organization vision, यदि organization का vision और mission clear है, तो क्या होता है? It helps an individual make a difference in the world because you are very clear with your vision, idea क्या है और तुम्हारे को क्या करना है. Then naturally उस वे से, उस एंगल से you will be giving your full time energy to do that. Obviously outcome will has to be good. The next is the leading and managing by using the values. All these values models we are seeing through, we have to use this. And when you are values जब तुम लोग ये करते हो, then कोई डर नहीं रहता है किसी को. और you are free from criticism and all these things. जैसे बोलते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका. तुमने कुछ चोरी किया है सोचो और वहां से एक पत्ता भी हिला, so you think कि कोई मेरे को पकड़ने आ रहा है. So if you are not doing your work properly, that means values यदि रख के चलोगे तो कोई तुमको अंदर से डर नहीं रहेगा. Because you know you have not done anything wrong, and no one will able to criticize you. And besides, people will be really respecting you, loving you. ये इंसान बहुत अच्छा है. That is what it says. Then allowing for decision making responsibility through self-managed empathy. माने वो decision making responsibility भी तुम कर सकते हो values लेने से. कहीं गड़बड़ हो गया मन इधर छुपाना, उधर मैनिपुलेट करना. गड़बड़ होने से, झूठ बोलने से जो होता है, सिंपल थिंग. एक झूठ बोला बोले ना, एक झूठ के पीछे और 100 झूठ बोलना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है. तो डिसीजन लेने के टाइम भी if you are not keeping up to the values, बहुत मैनेज करना is becomes very difficult. Sometimes you may be able to get away, but नहीं, हमेशा नहीं जा सकते. The next is the trusting people, that is letting them who they are.
and to use and develop their skills and gift. जो इंसान जैसा है उसको उस हिसाब से don't force them to do something else. For example, in our home also when you are in 9, 10, say you don't like, you want to be a say कुछ बनना चाहती हो, you want to study literature, पर घर से force कर रहे नहीं तुमको साइंस लेके पढ़ना है because साइंस में ऑप्शन है. So that should not be there when it comes to the skill. Organization में जिसका जो skill है you have to use them properly. You should not force them. Now coming to secularism. अभी तक तो spiritualism करा and secularism जो है it is non-religious and this is based on facts and science. Here it means that materialism and task oriented for the manager. जो भी कर रहे हैं टास्क ओरिएंटेड, ये कर रहे हैं रिजल्ट ये होना चाहिए, क्या हो रहा है चिंता, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या वैल्यूज रख रहे हैं, नहीं है मेरे को, तो who can prove I want the output. So coming to the features of secularism, that is the primary feature is emphasis on the material and the cultural development of human being. Material की तरफ फोकस करता है. Then is the concern for this world and its improvement. दुनिया क्या बोल रहा है, how you can improve it, you go for that. So for example, we people are more secularism follow करते हैं, spiritual भी लोग साधु संत लोग करते हैं, they are least interested. क्या हो रहा नहीं है उनमें, इनर पीस है एकदम, वो है, तो वो एकदम पूरा स्पिरिचुअली होते हैं. So it do not say that पूरा secular ही बन जाना माने spiritual बन जाना है, no, it should be balanced. Then responsibility towards the society, one should take maximum effort for the well-being of the society. Then maximize the profit without discrimination workforce. Maximum करो profit को, workforce को माने अलग अलग भागों में you don't discriminate them कि only this group is responsible for profit making, दूसरे लोग they are not so much involved in it, so it should not be there. Then professionalism means decision should not be on the basis of say your religion, which area you belong to, your caste or something. It should be on the your skills, on your profession. You are very good at this, so you should be given importance in that field. That is professionalism. The secular values lay emphasis on brotherhood of man and unity of the world. सब भाईचारा को they consider. Coming to the verse, if you compare these things, secular versus spiritual values in management, तो क्या होगा? Secular क्या है? It refers to the worldly thoughts and philosophy as reproduced by the management gurus. Management gurus ने जो बोला है उसके हिसाब से चलता है. Management guru जैसे चाणक्य था, we have done it in अर्थशास्त्र. And second is finds its way from Maslow need hierarchy and it culminates till most modern management thought. What does the word Marshall means? Marshall need क्या है? Can anyone tell me? चलो आंसर दो. What is One Marshall? second, ma'am. Repeat the question, ma'am. The question क्या? It is written there in secular. We have started the secular versus spiritual values in management. The first point what I am discussing. The first point, secular. In secular, the second point we are discussing. That is find its way from Marshall need. Now I am saying what does this Marshall need? Marshall, Ma'am, follow, ma'am, in Maslow needs there are three stages, ma'am. follow, Hello. come on. What are the three stages? Ma'am, in Hindi they are roti, kapda, makan, something. नहीं, मार्शलो का बेसिकली नीड होता है या यू आर सेइंग that motivates Need, back. It is the Marshall need is actually basically it is the motivation
इट इज द थियोरी ऑफ मोटिवेशन. अपन क्यों करते हैं मार्शल नीड? यही है, तुमने जो बोला वेरी गुड. पर कहीं भी कुछ भी करते हैं क्यों? ये रोटी कपड़ा मकान चाहिए करके. दैट इज द मोटिवेशन नीड. Yes, ma'am. सो दैट इज तो व्हाट मैम इट इज. বেসিক নিডস সেলফ অ্যাপ্রেজাল নিডস আর একটা সোসাইটি অবজেক্টমেন্ট নিডস এরকম কিছু ছিল কি? তোমার ভয়েসটা ক্লিয়ার নয়. এছাড়া তো আরো নিডস আছে. তোমাকে লোকে ভালোবাসবে, তোমাকে রেসপেক্ট দেবে সোসাইটিতে, তোমার চাকরি সিকিউর থাকবে, সেগুলো তো সব হয়. কিন্তু লাইক হি সেড, আই ডোন্ট নো হোয়াটস হিজ নেম, হি সেড these are the basically Maslow's need is basically it is the theory of motivation. It is the theory of motivation which states that it is the human need that actually dictates our behavior. এই যে লোকেরা যারা চুরি ফুরি করে, চুরি মানে আই এম নট সেইং যে এই রাস্তাঘাটে চুরি করে, ভালো ভালো মানে সে কি বলে হোয়াইট কলার পিপল চুরি করে মানে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম সেইং. ট্যাক্স দেবে না, ওখানে চুরি করছে, ওয়েল এডুকেটেড ওয়েল পেড. সো এইগুলো হচ্ছে যে তুমি কি বলবে চুরি করা. তো এগুলো কিসের জন্য? এগুলো আমাদের যার জন্য বলা হচ্ছে যে ইট আওয়ার নিডস অ্যাকচুয়ালি ডিকটেটস আওয়ার বিহেভিয়ার. তোমার নিডটা কিরকম? তোমার নিড হচ্ছে তোমার একদম বিশাল জিনিস চাই, তোমার ব্র্যান্ডেড জিনিস চাই, বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ইনকাম, সো ইউ উইল গো ফর আনফেয়ার মিনস. তার মানেই হচ্ছে তোমার বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে. ইটস নট এ নর্মাল থিং. তো আমরা এরকম বলতে গেলে ওটা তো বেসিক হচ্ছে, বাট এমনি দেখতে গেলে ইট ইজ দ্য সিকিউরিটি অর সেফটি নিড ইজ দেয়ার. আবার সেন্স অফ বিলঙ্গিংনেস, যে আমাকে সোসাইটিতে লোকে ভালোবাসবে, লোকে করবে, ফ্যামিলিতে আই এম অ্যাকসেপ্টেড and so all these things. So Psychological need also, ma'am. হ্যাঁ Psychological need is also there, na, ma'am. না, তো সাইকোলজিক্যাল নিড তো এগুলোই হচ্ছে না. তোমার সাইকোলজি কি বলছে? আর সেগুলোই তো তোমাকে বেসিক্যালি তোমাকে গাইড করছে. তোমাকে ওটাই তোমার বিহেভিয়ার গাইড করছে. তোমার তোমার যদি ওইগুলো নিড গুলো হয় তো অ্যাকর্ডিংলি ইউ উইল ডু. তোমার পয়সা কুলাচ্ছে না, ইউ উইল টেক আন্ডার টেবিল পয়সা তুমি নেবে. বাট ইউ আর স্যাটিসফাইড উইথ হোয়াট এভার মানি ইউ হ্যাভ. তোমার অ্যাক্টিভিটিস, তোমার বিহেভিয়ার উইল বি অ্যাকর্ডিং. সো দ্যাট ইজ Ma'am, সিকিউর. not getting, ma'am. Please say in English, ma'am. I did not follow. Follow. Ma'am, I didn't get what you said in Bengali, ma'am. Actually, I don't know that. Don't know money. So whatever I was talking, so you did not follow. You are saying. No, ma'am. I was following that, but I was saying that martial need is basically it is what we. It is basically the motivation. yes, ma'am. It is the motivation. It is Okay. theory of motivation, and from where we are motivated. Just the basic thing is, as Basic needs. the first student who spoke, it is the roti kapda and makan. That needs come from that. You need roti, you need kapda, you need makan. But Yes, if ma'am. you Basic see need. इसको और broader sense में देखने से रोटी कपड़ा मकान के साथ भी तुमको एक नौकरी चाहिए जो Yes, सिक्योर ma'am. होगा. हाँ Yes, बोलो. ma'am. After satisfying the basic need, then we can think of the higher one, na, No, ma'am. see, no, not actually, but basic need के लिए भी तो तुमको ये सब चाहिए ना. तो बड़ा basically you can say these are the basic needs जो अपने को तुम जैसे आज क्यों पढ़ रहे हो. You know, Yes, ma'am. after a certain time, your father will not be able to support you because he will be retiring. He age हो Yes. जाएगा उनका, तो तुमको कौन देखेगा? Yeah. तुमको तुम्हारा खाना, रहना, कपड़ा, Yeah, to you look and after then me. Yes, ma'am. yeah, then you will have a family. उनको देखना Yes, ma'am. वो तो बेसिक है. उसके बाद क्या है कि तुमको सब प्यार करे, दे लुक एट यू, दे रेस्पेक्ट यू, सोसाइटी में तुमको मान सम्मान मिले, ऑल दीज Dignity. Yes, थिंग्स. ma'am. हाँ. और ये नीड बेसिकली क्या है जो मार्शलोज नीड एक्चुअली ये अपना व्यवहार को कंट्रोल करता है. हाउ? तुम्हारा नीड जैसे सोचो, तुम्हारा नीड है माने तुम्हारा अर्निंग बोलो. तब लाइक वी से अरे कपड़ा, व्हाई डू वी वेयर ड्रेसेस? टू protect ourselves from the harsh weather. Yes, ma'am. But people क्या ब्रांडेड चाहिए, घड़ी ब्रांडेड चाहिए. अरे
इफ यू आर नॉट एबल टू एफोर्ड ब्रांडेड लेके तुम क्या करोगे? खड़ी टाइम दिखाने के लिए वो तो टाइम दिखा रहा है, तो तुमको चाहिए ब्रांडेड, क्यों तुम लोगों के दिखाओगे? तुमको तुम्हारा जो भी सोच है, तब वो लेने के लिए तुम क्या करोगे? 2 नंबर ही करोगे। So that guides your engagement. That is what it says. Now coming to the spiritual, it refers to the insight thrown on management जो अपन ने किया है वेदास उपनिषद और द स्पिरिचुअल गुरु जो जो उन्होंने बोला है, और ये बेस वहीं से मिला है, गीता और these things. So what they said, that is the spiritual thing. Now second point is, in case of secular, treat management values as a science. मैनेजमेंट वैल्यू जो भी है, वी शुड ट्रीट देम एज अ साइंस। ऐसा इसके लिए ऐसा होता है, साइंस मीन देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। देन ट्रीट मैनेजमेंट वैल्यूज एज अ इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, मैंने यहाँ से मेरे को कुछ इवॉल्व कर सकता है और आगे जा सकता है, ऑल दीज थिंग्स। एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन थॉट्स इज कंपैरेटिवली पुअर, जब अपन इंडियन लोग जो सोचते हैं इन सेक्युलरिज्म है, वो थोड़ा दूसरा है, क्योंकि अपनी ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न, आई थिंक सो लास्ट अपन ने डिस्कस किया था। सो यू हैव सीन दैट अपना बेसिकली अगर इंडियन जो माने ईस्टर्न और द इंडियन जो वैल्यूज जो ऊपर मैनेजमेंट बेस करती है, इट इज बेस्ड ऑन द ऑल दीज, इट इज बेस्ड ऑन ऑल दीज sacred books, not based on only profit making, किसको क्या चाहिए नहीं चाहिए ये है, नो, इतना दिया इतना मिलना चाहिए। तो इसलिए बोल रहे हैं जो कंपैरेटिवली पुअर है, क्योंकि इफ यू सी इट इन दैट एंगल, तुम ऑर्गेनाइजेशन में हो, यू आर जितना रोल किया मनी, सो नेचुरली यू विल बी नीडिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट तो आना चाहिए, बट प्रॉफिट शुड बी समथिंग, प्रॉफिट इट कैन बी टू एनी लेवल। सामान लोग ज्यादा कीमत से बेचते हैं, कम कीमत से बेचते हैं, तो दैट इज व्हाट इट इज। जितना मैक्सिमम प्रॉफिट करोगे, इट्स नॉट गुड, because something that is you say अपन बोलते हैं ना in Hindi, there is a saying ना, गला काट के एकदम या गला काटा दाम नहीं है, in Bengali we say it is not that you see that ठीक है मैन्युफैक्चरिंग इतना कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट इतना है, ये है, तो 10 रुपए का माने कॉस्ट हुआ है, so you can take up say 12 to 15 rupees, that means 2 to 5 rupees प्रॉफिट आएगा उसमें, बट तुम 10 रुपए का सामान तुम 20 रुपए में बेचोगे, so that is not, so इसलिए बोले कि ये कंट्रीब्यूशन इंडियन का थोड़ा कम है, because we look at things in spiritual manner. Now, coming to the spiritual, treat management values as philosophy, अपन philosophy लोगों को सबको लेके चलना, you go through that management जो अपन ने बनाया था, ये किया था, I think so you will be able to see in that. You remember in the last class we have done that difference between all those things. We look at the relationship, भाई किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, किसी को क्या प्रॉब्लम है, all those things we look at, but there they are, the western culture, they look at only product oriented and people oriented, कौन अच्छा और कौन कितना मेरे को प्रोडक्ट कितना दे सकता है जिसको मेरे को फायदा होगा, वही दिया। Belief sources like Bhagavad Gita as read reckoner of the value based, मैंने Bhagavad Gita, all these things, sacred books, भी, then ethical or moral and true sense, अपन ये सब को ज्यादा फॉलो करते हैं, ethics ज्यादा फॉलो करते हैं, उन लोग ethics उन लोग भी फॉलो करते हैं, but they are material oriented, in one word they are material oriented. Now value system in work culture. So what is work culture? Work culture in an organization means a set of shared rules, belief, attitude that dictates that how things are done and how people interact, basically. So company culture can be defined as a set of shared values, goals, attitude and practices that characterizes an organization. हर organization का अलग अलग culture रहता है, ठीक है? So values are key component of a healthy workplace. Work, if there is value, then the environment will be healthy. क्यों कोई किसी को पीछे नहीं लग रहा है, कोई किसी से jealousy नहीं हो रहा है, you know what you have done and what is how you are rewarded or how you are punished. Everything is transparent, what we have discussed. So the environment is healthy. So
Basically, this value system, they provide the framework within which you can test decisions, you can do your task, you can interact with others. Means there are set of rules, and like you have joined our college, so there are set of rules and regulations in our college which you have to follow. So see, set of rules regulations are there in every college. Semester means इतने दिन का होगा, but difference क्या है? Maybe in some colleges the timing is from 10 o'clock. लंच ब्रेक सोचो 1 घंटे का मिलता है, तुमको हाफ घंटे का मिलता है. उनके ड्रेस कलर कुछ होगा, some different color you have. So this is what I am saying. You know, these are the things. But basic क्या है? ड्रेस का कोड है, डिसिप्लिन है, वो अलग अलग है. So that is what it says. It depends upon the organization. So for this you have to have a clear set of rules should be there, because then they only become the foundation and the guiding principles for decision making, your actions, all these things. So that has to be very much made. The value system होना चाहिए एक organization. इतने दिन का छुट्टी, if you want something, say 2 दिन पहले तुमको लीव देना पड़ेगा, besides medical leave. मेडिकल तो यू डोंट नो, कभी बीमार पड़ेगा ये इमीडिएटली होता है, बट सपोज यू वांट टू गो फॉर सम holiday or something, so rules अलग है. हाँ, everywhere there is a rule that you have to apply for leave, but in other this thing वो अलग अलग हो. So, कहीं पे रूल होगा जब you have to apply 7 days बिफोर, और कहीं बोलेंगे कि 1 महीना पहले तुमको लंबा छुट्टी होने से 1 महीना पहले बोलना पड़ेगा. दीज आर द डिफरेंट रूल्स, बट रूल इज यू हैव टू, द कॉमन रूल और द ग्राउंड रूल इज यू हैव टू अप्लाई फॉर लीव. फट से एब्सेंट हो गया, लास्ट मोमेंट में बोले मेरे को नहीं आना है, इट कैन बी ओनली फॉर सम मेडिकल इश्यूज ओनली. दैट इज व्हाट इट इज. द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क वैल्यूज, workplace value in an organization. Let's see that strong work ethics and values play an important role in the workplace. The few important of them are this: values are the foremost thing which makes a company, because that only binds the people. Because companies are now tapping large part of the market, they are covering large part of the market, changing the demands, and also building altogether different environment in workplace. So they have to see to that. Second, it promotes a cooperating environment in the company. That means all the employees, they are working together for the common goal. If it is not there, say, if they are not doing it, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई टाइम से नहीं आ रहा है, then the company is not going to work. So behavior of the employee is not good, then the work environment will change. It will not be good, and that will affect the production. That is it. Promotes positivity among the employees. Because if there is a good work culture, if there are values, naturally the employees are very much happy. They respect and they are happy. Why? Because they are respected, they are taken care of. सब होता है तो उनमें मन में एक उत्साह होता है. So वो अच्छा हो जाता है. Enhances the interpersonal behavior. इसी के साथ रिलेटेड है कि उनके बीच में भी एक अच्छा रिलेशन है. बट यदि कोई रूल्स नहीं हो, कोई कंडक्ट्स नहीं हो, जो कुछ भी करे, कोई किसी के नाम में बोल रहा है, मीन्स देयर इज नेगेटिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द वर्क एनवायरनमेंट. सबके बीच में अच्छा भाईचारे का रिलेशन होना चाहिए. टू प्रिवेंट chaos विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सेम थिंग. कोई पर्टिकुलर जैसे रोड में जाते हो, इफ यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कोई chaos नहीं होगा. और अपना जैम क्यों लग जाता है? इधर से ठेला आ गया, उधर से ऑटो घुस गया, उधर से साइकिल वाला बाइक घुस गया. सो दैट इज इट. chaos नहीं होना चाहिए. इफ एवरीवन follow the ethics, code of conduct, so there will not be any chaos, but there will be nice peace, people will and friendly environment. सब अच्छे से जा रहे हैं, रोड
ट्रैफिक रूल सब फॉलो कर रहे हैं, सब अपने से अच्छे से ड्राइव करके जा रहे हैं, एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा है, टाइम में पहुंच रहे हो, तो यू आर एट पीस, अच्छा लग रहा है, मन मिजाज खुश है, सो यू कैन गिव मोर एफर्ट। मन चिड़चिड़ा हो गया तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यू आर नॉट एबल टू वर्क। नेक्स्ट इज टू लेट एन एम्प्लॉय वर्क फॉर अ कॉमन गोल, मानी इंसान को यू शुड गिव देम द फुल फ्रीडम टू वर्क, कोई प्रेशर कोई ये इट शुड नॉट बी देयर। तो इसके लिए क्या है, यू शुड गिव देम अ सेट ऑफ वैल्यूज होगा, रूल्स होगा, बस यू हैव द फ्रीडम। फॉर एग्जांपल सपोज तुम लैब में काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग इन अ लैब, तो लैब में तुम्हारा कुछ कुछ, जैसे केमिस्ट्री लैब, ऑल ऑफ यू हैव होपफुली, because science students have to go to the chemistry lab. Chemistry lab में कुछ कुछ rules है that you have to follow. Okay, because all acid, all these things are there. But the rest you give them freedom to work. Then only they will be able to work. नहीं तुम restrict करो है, इतना नहीं लो, वैसा नहीं करो, यहाँ पे मत रखो. If someone is always there, माने telling you to do something, then it becomes you don't feel like working because तुमको लगता है ये अभी कोई पीछे से कुछ बोलेगा. So you should have give the freedom because they all have the common goal. उनको goal बता दो ये our project का final ultimate goal is this, and now you have to give the output. So let them work following the whatever is the value system. वो value system रख के you could do it. That is it. To maintain discipline within the organization, obviously you understand. Then the values set the tone for the company's culture. It tells that what is your organization on the whole. And एक कल्चर जो होता है ना, तो वी से जी नहीं वहाँ का कल्चर अच्छा है, वहाँ का लाइक फॉर कॉलेजेस एंड ऑल यू से दोज कॉलेजेस व्हिच आर ऑन लिस्ट में हायर लेवल में है, से फॉर यू आर एमबीए स्टूडेंट्स, तो से आई एम जो है, तो उनका जो है वैल्यूज वगैरह वो उसका इट क्या बोलते हैं, tells your organization जी what it is. Like for our college and all, if you really perform very well after you pass out from this organization, if you are really successful, then people will say देखो स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकलते हैं, तो वो देता है. तो वैल्यू सेट द टोन फॉर द कंपनीज कल्चर, तो वहाँ का कल्चर अच्छा है, दिस इज व्हाट दे से. बट इफ बाय चांस एनी आउटसाइडर एंटर्स द ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ देखता है अरे ऐसे ही है, पढ़ाई नहीं होता है, क्लास में एग्जाम के टाइम चीटिंग होता है, ये होता है, नंबर ऐसे ही मिल जाता है, तो गिव्स अ बैड इंप्रेशन of the company and even of the employees, those who are working. So that is it. The values within the workplace attracts more employee. अच्छा healthy होगा तो क्या होगा, और लोग तुम्हारे यहाँ ज्वाइन करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन में. नहीं वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, सैलरी टाइम से मिलता है, छुट्टी भी मिलता है, इंसेंटिव भी अच्छा देते हैं, प्रमोशन भी अच्छे से काम करने से हो जाता है. सो तुम यू विल अट्रैक्ट मोर पीपल. तुम्हारा स्किल डेवलप करवाते हैं, तुम्हें जो स्किल है टाइम टू टाइम दे सेंड यू फॉर some courses or for some workshops. Because of this, people will want to be attached to your company. Work culture ठीक हो तो helps in the growth of the company, and naturally if all these things goes on properly, लोग क्या होगा, इंसान का मन मिजाज अच्छा रहेगा, so output काम में मन लगा सकेंगे in one word. Next is right things are done at the right time. Obviously right time में right things ही करना है, नहीं तो it doesn't help out. जैसे क्लास में देर से आ रहे हो, क्या हो रहा है, यू आर मिसिंग आउट. प्रॉब्लम किसको हो रहा है, दैट इज इट. राइट टाइम में राइट थिंग्स करना है. अपहोल्ड फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको जो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीपल शुड डू दैट. दैट इज फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, दैट एवरी इंडिविजुअल इज असाइन्ड अ टास्क टू अकम्प्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन. सो इसके लिए क्या करते हैं, तुम्हारा अपना गोल जो है, that you should take it very seriously, and you should any level you are working at, you may be a lower level employee, you may be a high upper level employee, whatever you are, but you should
take the responsibility that is for that post. That is the fundamental. Improve the performance. Obviously, you know that. अच्छा काम करोगे अच्छा परफॉर्मेंस होगा. For soothing functioning of the company, अच्छे से functioning values वगैरह लेके चलोगे तो naturally environment अच्छा होगा तो smoothly काम हो जाएगा. Assist in recruitment process. नौकरी देने के टाइम अंडर टेबल पैसा लेना, बड़े बड़े लोगों का रिकमेंडेशन लेके आना, so that should not be there. तुम्हारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होना चाहिए? It should be those who have really got the skill. They should recruit the most skilled and the excellent employee. तभी तो अच्छा काम मिलेगा, कंपनियां राइज करेगा. To distinguish yourself in the market. आज कोई कोई कंपनी लोग they have distinguished themselves. Why? इसका तुम बोल सकते हो. Because अंदर वर्क कल्चर अच्छा है, the employees they are giving their best, जिसके कारण प्रोडक्ट अच्छा है, तो your customers are happy. इसलिए तुम्हारा बाहर में तुम्हारा जिसको ब्रांड बोलते हैं, यू गेट अ गुड नेम, ब्रांड हो जाता है. यू गेट अ गुड नेम. जो ब्रांडेड नहीं है नहीं होता तुम्हारा, यदि खराब आउटपुट हो, खराब हो, लाइक फुटपाथ का जूता देखो और बाटा का जूता देखो. बाटा का जूता कॉस्टली हो सकता है, पर इट्स अ ब्रांडेड, पीपल गो फॉर इट. इट विल नॉट चीट यू. और रास्ते से फुटपाथ से तुमको कम पैसे में मिलेगा, बट यू डोंट नो दैट आफ्टर 2 स्टेप और आफ्टर 10 स्टेप वो खुल गया. देन यू आर इन अ embarrassing position. Next is provides an edge to compete. तुमको compete करने में भी helpful होता है. If the environment is good and if you are really very keen on the growth, actually then you will be able to compete. You will be able means तुम्हारा वो आएगा अंदर से जी मेरे को और compete करना है, और अच्छा जगह जाना है. Suppose you are the second boy or something class में अच्छे हो या first boy हो, but still whatever कोई भी मोटिवेशन अंदर से होगा शायद, लाइक ऐसे इन स्कूल्स एंड ऑल दीज थिंग्स द पीपल आर मोटिवेटेड. कहाँ पढ़ना है? इंजीनियरिंग पढ़ना है, ना मेडिकल पढ़ना है, ना कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है. सो यू पुट दैट एफर्ट. एज मैंने और उसमें भी कौन से कॉलेज में पढ़ना है, दैट आल्सो यू हैव. तो दैट कॉम्पीट करने का दैट अंदर से वो आता है. फॉर एन इंडिविजुअल ग्रोथ नेचुरली if people are so much sincere, environment अच्छा है, people काम कर रहे हैं, तो अपने आप का खुद का भी ग्रोथ होता है, because you learn. अच्छा environment है, all these things are good, it is in favorable, you are happy to work there. So while you are working, you learn so many things. Makes one orderly. That means when you are doing all these things, values रख के, तो तुम्हारा जिंदगी एक सब माने क्या बोलते हैं, एक रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे हो, ये कर रहे हो, so एवरीथिंग यू कैन से इज इन ऑर्डर. कहीं कैओस नहीं है, मिस नहीं हो जाता है कि ये हो गया, वो हो गया, गड़बड़ हो गया, वहां पे अरे इसको नहीं देखा, वहां पे नहीं देखा बोल के उधर गड़बड़ हो गया. इट नेवर हैपेंस दैट. इट विल बी, इट मूव्स ऑन इन अ ऑर्डरली फैशन. द नेक्स्ट इज कंपनी इज नोन बाय द कल्चर इट कीप्स. नेचुरली अपन बोलते हैं ना जी वो कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है. और हाउ कैन यू फिगर आउट द कल्चर ऑफ अ कंपनी? जिस कंपनी में तुम देखोगे जो चेंजिंग इन जॉब नहीं हो रहा है, एक बार लोग ज्वाइन करते हैं एंड देन दे डोंट लीव दैट कंपनी. दे आर इन द कंपनी फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत सालों से उस कंपनी में उन लोग, उससे से पता पड़ता है वर्क कल्चर अच्छा है, पीपल एंजॉय डूइंग देयर वर्क. इसलिए हाँ, वर्क कल्चर इज नॉट गुड, नेचुरली यू विल ट्राई टू मूव टू अनदर कंपनी. और द नेक्स्ट इज द to sure the existence. The company exists only when it gets registered as per law. Okay, तो कंपनी का एग्जिस्टेंस कैसे होता है? इफ इट इज गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से रजिस्टर करना पड़ता है. बट मार्केट में कंपनी कैसे एग्जिस्ट करता है? ओनली बाय द वैल्यूज एंड आर्ट्स. इफ द वैल्यूज आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू compete with the other companies at the same time. Sure, make sure of the existence means market में यहाँ पे existence.
लीगल एग्जिस्टेंस है, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ता है, पर यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है दैट यू हैव टू कीप योरसेल्फ व्हाट यू से, अपने को तैयार रखना है, फेस करना है जो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ में सर्वाइव कर सकूं. You are able to compete with your competitors. So in order to ensure that you exist, you have to be very sternly, very seriously, you have to follow these set of values and ethics or the rules you have to follow. Automatically rules follow करने से, जैसे simple sentence में I said if you follow the traffic rules कभी कोई accident या jam वगैरह नहीं होगा. एक्सेप्शनल केसेस हो सकता है, कोई गाड़ी बीच में खराब हो गया तो रुक गया, वहां बॉटल नेक हो गया, बट इन जनरल इफ एवरीवन फॉलोज द रूल, लाइक यू हैव सीन दैट ऑन फ्लाईओवर एंड ऑल, वहां ठेला गाड़ी नहीं जाता है, ऑटो नहीं चढ़ता है, बस नहीं चढ़ता है, बस भी जहां तहां रुक जाता है, बस जाम हो जाता है. तो लाइक वी यूज द say suppose from PG when you are going to Salt Lake and all, people use the Ma flyover. But if you go from below the flyover, which was there 3 4 years, 5 6 years ago, or say, so there what happens? So all those people are walking, bike है, ठेला गाड़ी है, auto है, bus है, so गड़बड़ है. So that is what it says. So if you very sternly follow the rules and regulations, obviously the company will be able to survive, and that it will be survived because of the people working in that organization. And why they are working? Because they are happy with the positive environment. So we have discussed some of the points which above points which tells us the value that values are important for the workplace. And through this points we know that values are not only important for workplace but also for the employees working in it. वर्क प्लेस को ही वैल्यूज रखना है वो नहीं, एम्प्लॉयज को भी अपना वैल्यू लेके चलना है, डिसिप्लिन में आना है, मिसबिहेव नहीं करना है, काम में शुड बी वेरी मच सिंसियर विथ योर वर्क एंड ऑल दिस थिंग, भाईचारा रखना है. ये तो ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है. ऑर्गेनाइजेशन का काम है ट्रांसपेरेंसी, दे शुड हैव अ क्लियर विजन, तुम लोग को मोटिवेट करना, स्किल डेवलप करना, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स. So this is due to the fact that both represent each other in the market. एम्प्लॉइज अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा, या ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है तो नेचुरली एम्प्लॉइज अच्छे होंगे, दे विल एंजॉय वर्किंग इन दैट. सो मार्केट में क्या होता है, दिस बोथ रिप्रेजेंट बोथ और ईच ऑफ देम रिप्रेजेंट ईच अदर इन द मार्केट. द एम्प्लॉइज एक्ट एज अ मिरर ऑफ द कंपनी. जहाँ कोई काम करता है तो एम्प्लॉइज के थ्रू ही, तुम आज के स्वामी विवेकानंद माने ग्रुप ऑफ माने इंस्टीट्यूट के यू आर द ब्रांड एम्बेसडर, यू कैन से आफ्टर दिस थिंग. तो तुम यदि अच्छे करोगे तो लोग बोलेंगे अरे देखो वो कॉलेज के हैं लोग, वहाँ बहुत अच्छा है उनका, बिकॉज यू आर द मिरर. कॉलेज जा जाके नहीं बोलेगा, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द आउटसाइड वर्ल्ड, वहां से कॉलेज का नाम आएगा. आज IIT IIM का नाम क्यों हुआ है? IIT IIM जाके कुछ बोलता नहीं है बाहर. इट इज द स्टूडेंट जो बाहर आते हैं, उनका जो भी whatever they are doing, whatever they are showing, their performance, their behavior, their work culture, उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है. नाम होने से क्या है, पीपल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना माने क्या, वो फ्लरिश करता है वो ऑर्गेनाइजेशन. So we say that employees act as a mirror to the company. So these are the, you can say, many of the solid reasons that we can say that the workplace values are very important. Okay, I think so. This was the last, yeah, this was the last slide. Any question? Any question? And this completes the second chapter also. Here? Why you are not talking? No, ma'am. Hello? ম্যাম এটা থেকে মানে এসব চ্যাপ্টার থেকে কোয়েশ্চেন্স কি টাইপের আসতে পারে, মানে যদি একটা গ্লিম্পস দেন খুব ভালো হয়. সেটাও তুমি পেয়ে যাবে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টে দেবো, পেয়ে যাবে. যেমন তোমার বলতেই পারে না যে ফর এক্সাম্পল তোমাকে কোয়েশ্চেন দিল যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন স্পিরিচুয়াল ভ্যালু অ্যান্ড দ্য এই যে সেকুলার ভ্যালু.
এটা দিল, কিংবা what are the, how do these values help in the development of an organization, or how they help you to compete in the market. এই ভ্যালুস গুলো দিতে হবে, ভ্যালুস গুলো থাকলেই তোমার ন্যাচারালি এনভায়রনমেন্টটা পজিটিভ হবে। ইন ওয়ান লাইন, পজিটিভ এনভায়রনমেন্টেই ভালো কাজ হবে, ঠিক আছে না? এগুলো ভালো করে বুঝলে তখন বুঝতে পারবে। এই যে হাউ ডাজ ট্রান্সকালচারাল হিউম্যান ভ্যালু হেল্পস ইন অ্যান অর্গানাইজেশন, অর্গানাইজেশনে ট্রান্সকালচারাল ভ্যালু কি করে হেল্প করছে? সবই এক কালচারের লোকে নিয়ে নিলেই তো হলো? No, because one thing, another is because your customers are also from different culture, different backgrounds. So obviously, তোমার organization তো তোমার জিনিসপত্রগুলো whatever it is, it should be also accordingly done. যেমন small জিনিস, for example, I'm not saying about the culture now. I'm saying, like see toothpaste. Yes, এটা কি হচ্ছে? Just like toothpaste. So you see there are a Colgate only. You can see that there are different size of a toothpaste. Whatever the toothpaste is, if you say Colgate or Sensodyne, whatever it is. And that also different কি বলবো, ingredients. Why? Because every people has different needs. Say if you consider the size of the toothpaste. Suppose you are traveling by flight. So you know that you cannot carry, of course, you are traveling for, say, going for office tour and all, you are traveling for 1 or 2 days, you have got a small suitcase, which you take it with you in your cabin. So when you take your luggage, cabin luggage, you cannot have a particular size is there. I think so it is something 50 ml or something, I don't remember. You have a small size which you can carry. Otherwise, you have to give your luggage for check-in luggage. People don't prefer to give in check-in luggages if possible, because for check-in luggage there is a wastage of time basically. আর অনেক সময় অনেক কিছু একটু তোমার কি বলে ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে, কারণ ওখানে মিসহ্যান্ডেলিং হয় না, এতে সেটা হয়। আর আরেকটা হচ্ছে চেক-ইন লাগেজের জন্য ইন দ্য বেল্ট ইউ হ্যাভ টু ওয়েট ফর সাম টাইম। তোমার কেবিন লাগেজ হলে কি হবে, তুমি ওটাকে নিলে ইউ ডাইরেক্টলি লিভ দেয়ার। ইট ইজ ডিপেন্ডস আপন দ্য রিকোয়ারমেন্ট। বাড়িতে তুমি হয়তো বড় পেস্টই ইউজ করছো, family size paste you are using. So that is what it is. ট্রান্সকালচারের যে আলাদা আলাদা কাস্টমার তোমার কাছে আছে, তাদের আলাদা আলাদা রকমের এ করবে। If এইটাই বলবে যে ট্রান্সকালচারাল ভ্যালুস গুলো কি করে তোমাকে, how it is helping in the development of the organization, or what if this transcultural human values, how does it make a manager good? ট্রান্সকালচারাল ভ্যালুস যদি থাকে তাহলে সেই ম্যানেজারকে ভালো বলা হয় কেন? কি কি ভ্যালুস থাকলে তাকে ভালো বলা হবে? These are the questions. Just like, get my point. I will give you the this thing assignment. You will be able to. You will know what the questions are. Okay. Anything Okay, ma'am. else? হ্যালো ম্যাম। হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম বলো। বলছি এটা কি মার্কেটিং এর আন্ডারে পড়ছে? না আপনার যে এই সাবজেক্টটা মার্কেটিং এর আন্ডারে পড়ছে? না, এটা নিজস্ব একটা ইন্ডিয়ান ভ্যালুজ অ্যান্ড কি 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 বলে তোমার ভ্যালুজ অ্যান্ড এথিক্স এর মধ্যে পড়ছে এটা। এটা আচ্ছা, মার্কেটিং এর মধ্যে পড়ছে না। তুমি অ্যাকচুয়ালি যদি এটা আমার ফার্স্ট ক্লাস তো। না, এটা অ্যাকচুয়ালি এটা কারোর আমার মধ্যে ফার্স্ট ক্লাস তো, পড়ছে না। ওই জন্য এটা একটু নিজেই তোমার আচ্ছা টপিকের সাবজেক্টই হচ্ছে MB 105। সাবজেক্ট আচ্ছা, ইজ অনলি MB 105। ঠিক আছে ম্যাডাম। তোমার এটা শুধু মার্কেটিং কেন বলবি তুমি? এটা তুমি যদি দেখো তোমার না না HR এর মধ্যেও তোমার এটা করতে হবে। হ্যাঁ শুধু তোমার প্রোডাক্ট ভালো হলে হবে না, তোমার যে লোকেরা যারা আছে তাদের সঙ্গেও তো তোমাকে তো সেই হ্যাঁ ভালো এনভায়রনমেন্টটা রাখার জন্য তো নিশ্চয়ই। ভাইচারা যেটা বলে হিন্দিতে, তোমাকে তাদের সঙ্গে ভালোভাবে রিলেশন রেখে করতে হবে। দেন অনলি ইউ উইল বি হ্যাভিং আ হেলদি এনভায়রনমেন্ট, প্রোডাক্ট ভালো হবে। হ্যাঁ সেলসে তুমি যদি দেখো সেখানেও তাই জানো, তুমি সেলস করছো একটা প্রোডাক্ট, তোমার যদি কাস্টমারের সঙ্গে ইফ ইউ আর নট সেই ভ্যালুস গুলো যদি নিয়ে না চলো, and the customer will not appreciate। ওর কি, ও ওর জিনিস কিনবে, পয়সা দেবে, জিনিস কিনবে। So you have to have the values, then only they will value you। জেনারেলি অর্গানাইজেশন আমরা কি দেখি যে কোনো একটা, এখন যেমন অনলাইনে স্পেশালি when you buy things you see যে তার রিটার্নটা সিস্টেমটা কতদিনে রিটার্ন হচ্ছে, কত ইজিলি হচ্ছে, হ্যাঁ, তো মানি ক্যাশব্যাক দিচ্ছে না জিনিস রিপ্লেস করছে। So that is the thing।
So sales rota chole jaচ্ছে. It's Okay. not in one subject. These values and ethics, it is there in in the first class I have said, it is required in every step of your life. Every step Okay. of your life. In one word, if you have these values and ethics, there will be peace of mind. And when there is peace of mind and joy, then you will be able to give your 100%. Okay, ma'am. Yeah. ভ্যালুস গুলো নিয়ে যদি তুমি লোককে ভালোবাসো, লোককে ছোট না দেখো, all these things includes in that. So that is there in everywhere, everywhere. It is not in marketing. It is not for one common subject, for a particular subject. It is there. You have to follow in your personal life also. You should value people. Like your কি বলে maid servant. আরে ও maid servant no. She is giving the service to you. If you consider as a this thing, then why you are keeping? You do it. She is doing that dirty work for you. So you should give her more respect. আমার যেটা বাথরুম পরিষ্কার করতে আসে, you don't want to do it whatever it is, but she is doing or he is doing it. So you should give that value. দেখো আমাকে করতে হচ্ছে না. Maybe because you don't have time. Maybe because you cannot do it. Or you feel dirty doing it. But someone is doing it. Which you should be grateful for that. Because after all, he or she is a person. And everyone in the society is required. If you say, "Arey sweeper ra faltu sweeper de dorkar nehi ki maid servant ra faltu na," can you imagine if you don't have sweepers or sufficient amount of sweepers, tale kothay kajta pore thakbe? Or if you say, "Oh, I can go without a doctor," or you can say, "I can go without a teacher, I can go without a lawyer." You cannot go without anyone. Each and every person is important in this life. প্রত্যেকের একটা করে রোল আছে to play. And that person is playing that role for your convenience. ডাক্তার তোমাকে ট্রিট করছে because to keep you healthy. আমরা কি করি? ও অত পয়সা পাচ্ছে, তাহলে ওরা ভালো, ওরা আপার ক্লাসে পড়ে আর ওরা নোংরা কাজ করছে। আরে why do you see that way? They're cleaning the নোংরা dirt so that you can have a clean place. You live in a clean place. There is no foul smell around you. একটা কুকুর যদি পড়ে থাকে and the sweepers they say no sweepers, you don't find any sweeper. And can you imagine what will happen? The kukuta pode ache, no one is ready to do. So that is what it is. This subject is the base of your life. Maybe it is your professional life or it is your personal life. Clear? Ache? Yes, ma'am. Bolo. Yes, ma'am. Bolo. কি হলো? Yes, ma'am, it's clear. তাহলে we complete this, আর এটা হচ্ছে গুগল ক্লাসরুম কোড, দেখে নাও। এখানে তুমি পাওয়ার পয়েন্টটা এটাও পেয়ে যাবে। I will post it there. Okay, this PowerPoint you will get it in this Google Classroom. Your assignment also you will find it there. কোনো problem নেই, submit করতে হলেও you will submit it in Google Classroom. ঠিক আছে? So these are the basic things. If you see it deeply and in a broader sense, you will see that it will enhance yourself only. তুমি নিজে অনেক কি বলবো, দুঃখ, কষ্ট, all these things you will be able to avoid. দুঃখ, কষ্ট সবই থাকবে পৃথিবীতে, but looking at things will change. Looking at things will change. And that will bring the peace of mind. তার জন্য বলে মেডিটেশন করতে। কেন? মেডিটেশন তোমাকে ওই সিচুয়েশন থেকে একটু বাইরে নিয়ে চলে যায়। That is what it is. So you end the class today. Okay, then have a good day. Bye bye. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.